will it, if I play sound, will it go here? This is a sound. Let's see if it works. Can we test the sound for my computer?
You will attain whatever you are meditating on in this life. जो है श्लोक पढ़ेंगे 1:8-41 where she calls Krishna the personality of the form of the universe. तो यहाँ पर भगवान अपने जो ब्रह्मांड में जो उनका रूप है वो बताएंगे. That means everything we are seeing, hearing, smelling, tasting, touching, it can remind us of Krishna. तो जो भी कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं और स्पर्श करते हैं, ये हमें भगवान का स्मरण कराएगा. Everything can act as an udipana or a stimulus to always remember Krishna. तो ये सारे चीज़ हमें मदद करेंगे भगवान को स्मरण करने के लिए. So we are going to go through some verses from the 2nd canto and the 8th canto about how we can find Krishna in the world around us. तो इसलिए आज हम दूसरे स्कंद और 8वें स्कंद के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं. So I think you cannot see. Can you over there? Can you sit so you can see the screen? जिनको दिखाई नहीं दे रहा है वो इस साइड आ सकते हैं ताकि उनको ये स्क्रीन दिखाई दे. I was just worried about these people over here. Can you see the screen? मुझे स्क्रीन देखना. Maybe put that to the side. Ah, that's better. Okay, everybody can see now? Bahut acha. Okay, so as we are going through this, I would like you to take some notes. Wake up. As we are going through this, I want you to take some notes. तो अभी हम इसके प्रसंग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, तो मैं कुछ नोट करवाना चाहूँगी. I'd like you to pick 1, 2, or 3 things that from this presentation that you are going to meditate on in the next week. तो मैं 3 मुख्य तथ्य बताऊंगी जिसके ऊपर आपको ध्यान लगाना है इस क्लास को. Did you only say 3 or did you say 1, 2, or 3? ओह सॉरी. 1 2 3 तथ्य के ऊपर 1, बताऊं. 2, or 3. Sure. And at the end I will ask. और अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी. So the Lord's voice is the center of fire. Can you repeat?
The Lord's voice is the center of fire. भगवान की जो आवाज़ है वो केंद्र बिंदु है of which Can you see the screen? The Lord's voice is the center of fire. ओके जो अग्नि का जो केंद्र बिंदु है वो भगवान की जो है वो आवाज़ है. This is going to take a very long time. So fire illuminates and purifies and destroys what is not wanted. और जब अग्नि जो प्रज्वलित होती है वो सभी चीज़ को नष्ट कर देती है. When we are speaking like that, then we are speaking on behalf of the voice of the Lord. और जब हम बोल रहे होते हैं, जब हम ये चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो हम भगवान की आवाज़ के ऊपर बता रहे हैं. His skin is the Vedic hymns. और जो जो हमारी त्वचा है वो वेदों की जो है वाणी है. That means when we are chanting Hare Krishna or saying other Vedic hymns, we are touching the skin of the Lord. इसका तात्पर्य यह है कि जब हम जो है ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो हम भगवान की त्वचा को स्पर्श कर रहे हैं. And the Vedic hymns are also the passage from the Lord's brain. और जो वैदिक जो है हिम्स हैं जो वाणी है वो भगवान की नस भी है. The Vedas are the brains of our spiritual community. और जो ये वेद वाणी है जो हमारे आध्यात्मिक स्तर की जो है ज्ञान है. Without which our community cannot function. जिसके बिना इसके जो है हमारी जो है ये कम्युनिटी है कार्य नहीं कर सकती. I need you to be much more interactive with the audience. I need you to be more present and more interactive with the audience. Okay? Okay, good. And his words are also the Vedic mantras. और जो भगवान के जो है शब्द हैं वो वैदिक मंत्र हैं. So when we are hearing the Vedic mantras, we are hearing the words of God. तो जब हम वेद मंत्र सुनते हैं तो हम भगवान के जो है शब्द सुन रहे हैं. With the audience. You're doing this. Okay. From his tongue comes all the food. और जो भगवान की जिह्वा से सारे फूड खाना आता है. So our tongue is eating food and his tongue is producing food. हमारी जो जिह्वा है वो खाना को लेती है और भगवान की जिह्वा जो है खाना देती है उत्पन्न करती है. And Krishna wants us to share this food with other living entities. और जो भगवान कृष्ण इस जो खाने को जो है और जीवों को देते हैं बांटते हैं. From his tongue also comes all the different tastes and flavors. और भगवान के जिह्वा से अनेक प्रकार के जो है अलग अलग रस उत्पन्न होते हैं. By the way, any of you who want this presentation, I'm happy to share with anybody. तो जो भी आप ये प्रेजेंटेशन से सीखना चाहते हैं वो शेयर करूँगा. If you give me one place, then they can distribute. If you give me one place to send, then they can distribute. अगर आप हमें एक स्थान देते हैं तो मैं ये सारे कुछ वितरित करूँगी. And in our book, we also have short little meditations on each of these. तो जो कुछ माताजी बताने जा रहे हैं तो इस पुस्तक में सब कुछ का विवरण किया गया है. Little 5-minute meditations on each of them. तो इसमें किस प्रकार से हमें भगवान का स्मरण ध्यान लगाना इसमें दिया गया है. On his lips is greed. तो जो भगवान का जो ओंठ है वो व्हील ओके वो लालच की तरह लोभ की तरह. So our lips can also be greedy. हमारे जिह्वा भी जो है हमारे जो ओंठ हैं वो भी लालच की तरह हो सकते हैं. We want to talk too much. हम जो है ज़्यादा बोलना चाहते हैं. We want to eat too much. हम ज़्यादा खाना चाहते हैं. What is Krishna greedy for? भगवान को किस चीज़ में लोभ है. आंसर. And what does Giriraj Maharaj say?
So his smelling creates all the medicinal herbs. तो भगवान जो है जितने भी हमारे औषधि हैं वो भगवान से ही आती हैं. When you are making some herbal preparation, तो जब भी आप कुछ पकवान बनाते हैं इत्यादि व्यंजन इत्यादि, and you are smelling those herbs, और जब आप उन औषधियों को जो है सूंघते हैं, that is from the smelling of Krishna. तो वो जो है भगवान जब सूंघते हैं वो है वो औषधियों में. From his smelling also comes the wind. और भगवान की जो स्माइल है, जो हंसी है, उससे जो है हवा उत्पन्न होती है. And the wind brings changes in the weather, और हवा जो है पूरे वातावरण को परिवर्तित कर देती है. like Krishna's breathing brings changes in our life. तो भगवान की जो हंसी है वो सारे जो हमारे अंदर जो बदलाव लाती है. From his breathing comes our breathing. और भगवान की सांसों से हमारी सांसें आती हैं. Just like we have so many little cells in our body, जिस प्रकार से हमारे शरीर में कई प्रकार के सेल्स होते हैं, and each of them is breathing. और हर एक सेल जो है सांस लेता है. So when I breathe, that is allowing each cell in my body to breathe. तो जब मैं सांस लेता हूँ तो वो मेरे जितने भी सेल्स हैं उनको अलाउ करता है सांस लेने के लिए. Krishna's breathing allows each of us to breathe. और भगवान की सांसें हमें सांस लेने के लिए प्रेरित करती हैं. From his breathing come all of the smells in the world. और जो भगवान की सांसें हैं उससे जो भी सुगंध हम सूंघते हैं वो आती हैं. So of course our breathing may also have a smell. और इसलिए हमारी जो सांसें हैं उसमें स्मेल होता है, गंध होती है. Often our breathing smell is not very nice, तो इसलिए जब हम सुगंध लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है. and people take all kinds of breath mints. तो इसलिए जो है लोग अनेक प्रकार की सुगंध को जो है सूंघते रहते हैं. But Krishna's breathing creates the jasmine and the rose and the gardenia. परंतु भगवान की जो सांसें हैं उनकी वो बिल्कुल विशेष है. उनसे जो है जैस्मीन और अनेक प्रकार के फूलों जैसे सुगंध आती है. Of course you could say, what about the bad smells? Do those come from Krishna's breathing? तो जो दुर्गंध है, जो प्रिय नहीं है हमें, वो भगवान से नहीं आती है. And of course that is also true. और ये भी सत्य है, भगवान से ही आती है. But these bad smells, they are part of Krishna's love. वो जो गंध है वो भगवान के प्रेम से आती है. The bad smells tell us when something is impure or infectious. जो दुर्गंध है, अप्रिय गंध है, वो हमें बताते हैं कि कुछ जो है अच्छा नहीं है, अशुभ है. And we have two words, one for breath and one for air. तो हमारे पास दो शब्द हैं, एक है सांसें और दूसरा है वायु. And we think air is just some inert gases. हमें लगता है जो हवा है, जो वायु है, वो गैस है सिर्फ. But Bhagavatam says the air is the prana and the breath of the Lord. भागवतम कहते हैं जो एयर है, It is the Lord's breath, it is the Lord's prana. तो भागवतम कहते हैं कि जो वायु है वो भगवान की सांसें हैं. When we are breathing in, we are breathing the prana of the Lord. तो जब हम सांस लेते हैं तो हम भगवान के द्वारा दी गई सांसें लेते हैं. His prana. प्रणव, Do you know what prana is? प्राण. ओके, तो ये जो है हम जब सांसें लेते हैं वो भगवान की प्राण वायु है. Sanskrit word. And when the Lord sees, he creates form. और जब भगवान देखते हैं वो रूप उत्पन्न होता है उससे. So I am seeing form. और मैं भी जो है कुछ रूप जो वस्तु है वो देख रही हूँ. But the Lord, when he sees, he creates form. परंतु जब भगवान देखते हैं तो वो रूप उत्पन्न हो जाता है उससे. So we have a very nice picture here. तो हमारे सामने बहुत ही सुंदर So I cannot do this. परंतु हम ये नहीं कर सकते हैं. I cannot look at the table and make jalebis. तो मैं टेबल को देख कर के टेबल उत्पन्न नहीं हो सकते. So everything that we are seeing, the Lord has created with his eyes.
तो जो भी हम देखते हैं वो भगवान ने अपने आँखों से उत्पन्न किया है। And his eyeballs are the sun and the different planets. और जो भगवान के आईबॉल हैं वो है अलग अलग, ये सूर्य है और अलग अलग जो है ग्रह ब्रह्मांड हैं। When we see the sun and the planets, we are looking into the eyes of Krishna. तो जब हम सूर्य को देखते हैं तो हम भगवान की आँखों में देख रहे हैं। Deep connection. तो बहुत ही गहरा हम संबंध स्थापित होते हैं। And then his eye pits, you know what the eye pits are? Like the eye socket? His eye socket is outer space. और जो भगवान की जो आँखों का सॉकेट है वो जो है स्पेस है, ग्रह। And Srila Prabhupada talks about this a lot because Krishna as the sun is seeing, therefore we can see. तो प्रभुपाद इसको बताते हैं क्योंकि कृष्ण देखते हैं इसलिए हम भी इनको देख पाते हैं। This is a very nice one to meditate on. तो ये बहुत ही सुंदर विषय है जिसके ऊपर हम जो है स्मरण कर सकते हैं। When Krishna's eyes are open, it is day, and when his eyes are closed, it is night. तो जब भगवान की आंखें खुली रहते हैं तो वो दिन होता है यहाँ पर, और जब भगवान की आंखें बंद होती है तो वो रात्रि होती है। When we wake up, he is opening his eyes. When we go to bed, he is closing his eyes. जब हम सुबह जगते हैं तो भगवान अपनी आंखें खुली रहते हैं, और जब भगवान आंखें बंद करते हैं तो हम सो जाते हैं। This one I also really like to meditate upon. तो इसके ऊपर मैं भी जो है स्मरण करना चाहूँगी। When the sun is rising or setting, this is the moving of the Lord's clothes in the sky. तो जब सूर्य अस्त होता है और जब उदय होता है और अस्त होता है तो भगवान भी जो है अपनी आंखें बंद कर रहे होते हैं। We know the Lord wears yellow, golden clothes. तो हम देखते हैं कि भगवान जो है सुंदर पीले वस्त्रों में रहते हैं। And then underneath his body is this dark blue. और उनकी जो है वस्त्र, उनकी शरीर ब्लू नीले रंग का है। And we see these colors in the morning sunrise and evening sunset. तो हम जब ये रंग देखते हैं, जब सूर्य उदय होता है अस्त होता है, ये वाला रंग दिखते हैं। On his neck is all the sounds. और भगवान के जो कंठ में गर्दन है उस पे और सारे शब्द रहते हैं। Sometimes we see birds have their neck moving when they make sounds. तो जो हम कभी कभी देखते हैं कि जो चिड़िया होती है जब वो चर्प करती है, आवाज़ निकालती हैं, तो उनके जो है गले पर जो मूवमेंट होता है। His ears hear everything, but especially the Vedas. I couldn't hear, please. His ears hear everything, but especially the Vedas. ओके, तो भगवान के जो कान हैं वो मुख्य रूप से वेद हैं। Just like we especially hear the sound of our own name. तो मुख्य रूप से जब हम अपना नाम सुनते हैं, And from his ears are coming all of the sounds. और भगवान के कानों से सभी शब्द उत्पन्न होते हैं। This is very important. ये बहुत मुख्य है। From his tongue is coming all the tastes. भगवान की जीवा से सारे टेस्ट उत्पन्न होते हैं, Rasa. रसा। From his breathing is coming all the smells. और भगवान की सांसों से सारे गंध आते हैं। From his eyes are coming all the forms. भगवान की आंखों से सारे रूप उत्पन्न होते हैं। From his ears are coming all the sounds. और भगवान के कानों से सारे शब्द उत्पन्न होते हैं। So why do we go any place else but to Krishna for anything that we want? तो हमें क्यों नहीं भगवान स्मरण होते जो भी हम चीज़ें देखते हैं? Everything we want, everything we can desire is there in Krishna. तो जो भी हम इच्छा करते हैं, जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो भगवान में है। In his steps are the sacrifices of our general worldly activities. तो इस विधि में हमारी जो कार्यकलाप हैं वो आते हैं। This is called Havya Karma Bihi, to be able to link our ordinary activities to the Lord as yajna. तो इसको कहते हैं कार्य कर्म भी, इसी तरह Havya Karma Bihi. हव्य कर्म भी। तो जो हमारी जो भी भौतिक कार्यकलाप होते हैं उनको आध्यात्मिक कार्यों में बदलना, उनको आध्यात्मिक कार्यों में परिवर्तित करना।
In his touch is lusty desires. और भगवान का जो स्पर्श है वो जो है काम वासना है। This is why we are very careful who we touch. तो इसलिए हम बहुत ही गंभीर होते हैं जब हम कोई चीज़ को स्पर्श करते हैं। I remember this whenever I am avoiding touching somebody. तो हम एक गैप बनाते हैं जब हम किसी को टच कर रहे होते हैं। So all of the vegetation are his hairs. तो जो वेदा है वो भगवान के हेयर हैं। And we can notice how beautiful are so many of the plants on this planet. तो इसलिए जो भगवान के जो शरीर है वो है We can notice how beautiful are so many of the plants and vegetation on this planet. तो इसलिए हमें जो है बहुत ही सुंदर जो है सब्जियां हमें दिखती है, वेजिटेशन दिखते हैं, पेड़ पौधे। I'm sorry. No, no. Vegetation and vegetables completely different thing. You mean by trees or how? Any kind of plants. Okay. तो जो वनस्पतियां हैं वो जो है सब्जी। भगवान वनस्पति। Sabji nahi. I'm sorry. Vanaspati is the right word. Ah, okay. I think so. So, we may be looking at some very beautiful plant. तो जब हम किसी सुंदर जो है पेड़ पौधे देखते हैं, And then we think how beautiful must be every hair on Krishna's eyebrow. तो हम बहुत अच्छा लगता है हमें कोई भी पेड़ पौधे देख करके, तो ये भगवान की आईब्रोज हैं। We could probably look at one hair on Krishna's eyebrow for all of eternity. तो हम भगवान की आईब्रो के एक बाल को देख सकते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को बताते हैं, इटर्निटी को बताते हैं। And the trees are the hairs on his body. तो जो पेड़ हैं वो भगवान के जो शरीर पे के बाल हैं। So sometimes we have some little insect that is walking on our arm. कभी कभी हमारे शरीर के त्वचा पर कुछ कीट पतंगे चलती हैं, हम देखते हैं। Do you see that? So when we are walking among the trees, तो हम जब पेड़ों के बीच से गुजरते हैं, we can meditate, I am like a little insect walking on the body of the Lord. तो हम ध्यान कर सकते हैं कि भगवान के शरीर पर कुछ कीट पतंग चल रहे हैं। So I like to meditate like this. तो मुझे पसंद है इस प्रकार से भगवान स्मरण करना। That way we can you see this way? Well, why are you sitting there? Sit where you can see. इधर बैठ जाइए जहाँ से आपको एलईडी स्क्रीन दिखाई देती। And that way we can feel very close to Krishna when we are walking among the trees. तो इसलिए हमें जब है भगवान के हम बहुत निकट हो जाते हैं जब हम पेड़ों के बीच से गुजरते हैं। And the clouds are the hair on his head. तो जो बादल है वो भगवान के सर है। So of course Krishna's hair is dark, तो इसलिए जो हमारे जो है सर के बाल काले होते हैं, but sometimes the clouds are white. परंतु कभी कभी जो है बादल जो है गहरे सफ़ेद होते हैं। So when does Krishna's hair look white? तो भगवान के जो बाल हैं कब सफ़ेद होते हैं? क्वेश्चन। I want to see who reads the Shastra. मैं जानना चाहती हूँ कि कौन शास्त्र पढ़ते हैं। When does Krishna's hair look white? भगवान के बाल कब सफ़ेद दिखते हैं? Somebody is raising hand. Yes? At the end of devastation, at the time of devastation. Oh, maybe I don't know. Yes, no, never is not correct. Yes. Oh, wonderful. तो जब Yes. भगवान गाय चराते हैं, When he's coming home in the afternoon तो जब भगवान घर आते हैं दिन के मध्य with the के समय cows, and और गायों के साथ, and the dust from the cows is in his hair. और जो धूली है गाय के चलने से वो भगवान के शरीर पर लग जाती है। So when else? Or इसके अलावा yes, yes.
So when he's coming with the chariot wheel for Bhishma, तो दूसरा, जब भगवान जो है भीष्म के ऊपर जो है अपना जो रथ का व्हील जो चक्र लेकर के चलते हैं, thank पहिया। you. Thank you. So after class, these two devotees should get Maha Prasad. हरि और So on his hairs are all of the drugs and the herbs. All of the medicines in the world are his hairs. तो जो भगवान के जो शरीर पे बाल है वो सारे जो औषधियाँ हैं वो उसके समान है। So when we are sick and we take some medicine and then we feel better, तो जब हम बीमार पड़ते हैं और हम दवाई लेते हैं तो हम अच्छा अनुभव करते हैं। like I have a cold, मुझे जुखाम है, so I'm going to take some cough drop. This is from Krishna's hairs. तो जो मैं खा रही हूँ वो भगवान के बाल है And it is full of Krishna's fragrance from his breathing. तो ये पूर्ण है भगवान की जो है सुगंध जो है भगवान के सांसों से। You see, that is very easy, yes? कितना आसान है भगवान को स्मरण करना। And his nails make the electricity. और जो भगवान के नाखून हैं वो इलेक्ट्रिसिटी करंट उत्पन्न करते हैं। When you turn on your phone, और जब आप अपना फोन ऑन करते हैं, you turn on your light, जब आप बल्ब को ओपन करते हैं, it is the touch of Krishna's nails. तो इसका मतलब हम भगवान के जो नाखून हैं उनको स्पर्श कर रहे हैं। On his nails are the horse, the mule, the camel, and the elephant. जो घोड़े हैं और जो ऊंट है, हाथी है, वो भगवान के नाखून के बराबर के तुल्य हैं। These are the working animals. तो ये कार्यशील जानवर होते हैं। Just like our nails, we use them like tools. तो जिस प्रकार से हम अपने नाखूनों का एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, Also on Krishna's nails are all the stones. भगवान के नाखून पत्थर भी हैं के तुल्य हैं। स्टोन्स, Stones. यस आई सेड द सेम। Uh-huh. And jewels. और ये आभूषण की तरह भी हैं। Ratna. रत्न, yes, रत्न। So I remember this whenever I see ladies with painted nails. तो मैं इसका स्मरण करता हूँ जब मैं माताओं को जो है अपने नाखूनों को पॉलिश नेल And I पेंट, think, oh, Krishna's nails are actually like rubies and diamonds and emeralds. तो मैं स्मरण करता हूँ कि भगवान के जो नाखून हैं उनमें रत्न जड़े हुए हैं, जड़ित हैं। And the wild animals are on his belt. और जो खतरनाक भयानक जो जीव हैं, जानवर हैं, वो भगवान के जो कमर पर लगी हुई बेल्ट के तुल्य हैं। So our belt holds up our clothes. जिस प्रकार से हमारी बेल्ट जो है वो हमारे कपड़ों को बनाए रखती है। And the wild animals, they keep the balance in the ecosystem. तो इसी प्रकार से जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, वो इकोसिस्टम को जो है बैलेंस रखते हैं। His feet give us protection from all kinds of fear. और भगवान के जो पाँव हैं वो सभी प्रकार की जो है खतरों से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। Just like when we are walking on uneven ground, तो जब हम जो है चलते हैं जहाँ पर अच्छा रास्ता नहीं रहता है, our feet give us stability. तो हमारा जो पाँव है वो हमें बैलेंस रखते हैं। And can remind us of how Krishna's feet give us stability and support in this world. They can, when we are walking, we can remember how Krishna's feet give us support and stability in this world. तो जब हम चलते हैं तो हमें स्मरण होना चाहिए कि जो भगवान किस प्रकार से हमें जो है जो चलते वक्त हमें मदद करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, बैलेंस कराते हैं। From his semen come all of the rains. और जो भगवान के सीमन है, वीर है, उससे जो है सारे वेद निकलते हैं। Generally, a male can only produce offspring of the same species. तो जो पुरुष है वो एक ही प्रकार के जीव को उत्पन्न कर सकता है। But
Krishna is Aham Bija Pradapita. He is the father of all living entities. परंतु भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि अहम बीज प्रदापिता, वो सभी जीवों के परम पिता हैं. And he is producing all species. और भगवान जो है हर प्रकार के जो है प्रजातियों को उत्पन्न करते हैं. Also from his semen come all of the waters. और भगवान के जो वीर है उससे जो है जल भी उत्पन्न होता है. Water is the main source of our energy and purification. तो पानी ही हमारे जो है मुख्य स्रोत है शुद्धिकरण का और जीवन जीने निर्वाह करने का. And it is the concentrated energy of the Supreme Lord. और जो भगवान की ये जो है ऊर्जा एनर्जी है. This is how we can remember Krishna also when we are on the toilet. तो इस प्रकार से हम भगवान को when we Are on the toilet. ओके toilet. तो जब हम बाथरूम में होते हैं हम भगवान का स्मरण वहां पे भी कर सकते हैं. Prabhu. The ladies. Yeah. So the Lord also has an evacuating organ. तो भगवान का जो इवैक्यूएटिंग ऑर्गन होता है उनका, By which he gets rid of all the toxins in the universe. तो उससे जो है जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, वो जो हैं इस संसार में वो है. And there is Mitra, our friend. What is our friend? Mitra. Mitra. मित्र. ओके तो दोस्त, इज इट फ्रेंड यू मीन? Doesn't that mean friend? तो Yes? जो मित्र हैं वो भी भगवान के. Yes? Yes. You're going to say in Hindi for them I or have no? said them. You've already जो said. Okay. So when जो our, हमारे दोस्त हैं वो भी भगवान के. so when our digestion is working, it is our friend. तो जो हमारा जो है भोजन जो है पाचन क्रिया होती है वो हमारे मित्र हैं. And from his jaws, he is crushing all the sinners in his teeth. तो भगवान के जबड़ों से जो पापी हैं वो भगवान क्रश करते हैं, उनको जो है मार देते हैं. When some terrible criminal is getting punished, तो जब कुछ जो उग्रवादी जो खूंखार लोग मारे जाते हैं तो वो हमें स्मरण करते हैं. whenever there is some terrible criminal that is getting punished, तो जब कोई खूंखार जो है क्रिमिनल को मारा जाता है, पनिश किया जाता है, उनको दंड दिया जाता है. done, yeah. दंड. That is Krishna smashing them in his teeth. तो इससे हमें पता चलता है कि इससे हमें क्या स्मरण होना चाहिए कि भगवान उनको अपने दांतों से उनको कुचल रहे हैं. But his teeth are also full of affection. और भगवान के जो दांत हैं वो फुल ऑफ अफेक्शन, वो प्रेम के भी देते हैं. And Krishna's back is the place of immorality. और जो भगवान का कमर है वो मोरालिटी, इमोरालिटी का है. Adharma. So one time some airplane pilot came to talk to Srila Prabhupada. ओके तो एक बार जो है एक जहाज के पायलट प्रभुपाद के पास आए बात करने के लिए. And he said to Prabhupada, if God is all good, why is there evil? तो वो प्रभुपाद से पूछते हैं अगर भगवान सभी के हितैषी हैं तो यहाँ पर इविल जो है बुरे लोग क्यों हैं? And Prabhupada said, evil is on God's back. तो प्रभुपाद कहते हैं जो बुराई है वो भगवान की कमर है. Even the evil doers are in the body of God. तो जो गलत कार्य करते हैं वो भगवान के जो है कमर है. But they cannot see his face. परंतु दुर्भाग्य की बात यह है वो भगवान का फेस नहीं देख सकते हैं, मुख नहीं देख सकते हैं. Mukh. So the veins are his veins are all the rivers in the world. तो जो भगवान की जो नसें हैं वो जो नदियां हैं वो हैं. The rivers make the borders between countries. जो नदियां हैं वो बॉर्डर बनाती हैं देशों के बीच. They decide where the humans are going to live.
और वो निर्णय करती हैं नदियाँ कि कहाँ पर जीव रह सकते हैं how the animals are going to be moving, और किस प्रकार से जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है how we are going to transport things from one place to another. और किस प्रकार से हम वस्तुओं का आयात निर्यात कर सकते हैं. And these rivers being the veins of the Lord, और जो ये नदियाँ हैं भगवान के नस होने के नाते they are the messengers of his heartbeat. तो वो जो है एक दूत के समान होते हैं भगवान के जो है जो हृदय की जो धड़कन है उसको जो है आदान प्रदान करते हैं. I was thinking he got it so well. And on his bones are the mountains. और भगवान के जो हड्डियां हैं वो जो है चट्टाने हैं that give the strength and structure to the universal body. और वो इस प्रकार से जो है इस संसार को जो है एक शक्ति प्रदान करते हैं. Anyone who is protecting human society is on the Lord's arms. तो जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं जीवों को वो भगवान के जो है भुजाएं हैं. From the great demigods like Indra, और उससे जो है जैसे कि इंद्र है down to the police officers and the firefighters. डाउन टू दी Police officers and the firefighters. ओके और इंद्र से लेकर के जो पुलिस है और ये फायर ब्रिगेडर्स हैं वो सभी They भगवान are की on the भुजाएं Lord's arms. वे भगवान की भुजाएं हैं. And one of Krishna's 64 qualities is that he is shy. और भगवान की 64 गुणों में से एक गुण है भगवान जो है शर्मिंदगी उनको होते हैं शाइनेस. And this modesty is his upper lip. और मॉडेस्टी और जो उनका मॉडेस्टी आई डोंट नो व्हाट इज Shyness, modesty. नम्रता और उनके जो भगवान को शर्मिंदगी है वो भगवान के जो ऊपर वाले ओंठ हैं वो हैं. Isn't that right, huh? Isn't it? He's like this. तो भगवान माता जी showing that how Krishna does सहजता. Okay, नम्रता is different. So it is like he is very modest. तो भगवान बहुत सहज रहते हैं. Sometimes he's like an artist that does not sign his paintings. Could you repeat, माता? Sometimes he is like an artist who does not sign his paintings. Okay. तो भगवान कभी कभी जो है एक आर्टिस्ट एक कलाकार की तरह है जो क्या बनाते हैं सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं. So the atheists can look at the world and they don't see God. जो नास्तिक होते हैं वो ब्रह्मांड को देखते हैं लेकिन फिर भी वो भगवान को नहीं देख पाते Because he is like this. क्योंकि भगवान इस प्रकार से अपना मुंह करके बैठे खड़े. Desire is on his chin. और जो इच्छाएं होती हैं भगवान की जो चिन्ह Like a little child. जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा करता है गुस्से जब गुस्सा आता है I want that. जो छोटा बच्चा करता है कि मुझे ये वस्तु चाहिए. So what does Krishna want? तो भगवान को क्या चाहिए प्रश्न. क्या चाहिए भगवान को. Yeah, very nice. On his heart is dharma. और भगवान का हृदय है वो धर्म है. If we are following dharma, then we are next to the heart of the Lord. अगर हम धर्म का पालन कर रहे हैं तो हम भगवान के हृदय के निकट हैं. And on his chest is truth spoken pleasingly. तो भगवान की जो छाती है वो what's that? Truth that is spoken pleasingly. ओके तो वो है सत्य जो कि बोला गया है और जो दूसरों को प्रिय लगता है. Anybody can speak truth harshly, हर कोई जो है सत्य बोल सकता है ईमानदारी से. but when we speak truth pleasingly, we are being held to the chest of the Lord. तो जब हम सच बोलते हैं सत्य बोलते हैं तो हम भगवान से जो है उनको हग कर रहे हैं उनको से आलिंगन कर रहे हैं. Let's try that again.
Try it again. तो जब हम सच बोलते हैं तो भगवान को हम आलिंगन कर रहे हैं, And then we are next to his heart of Dharma. और हम जो है उनके हृदय के निकट हो जाते हैं, And we are also next to the goddess of fortune on his chest. और हम जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के भी जो है आलिंगन करते हैं नेक्स्ट तो उनके। Also on his chest are all the stars. और जो भगवान की छातियाँ हैं उससे जो स्टार्स जो तारे हैं वो हैं। Just like the Lord wears necklaces that glitter like stars. तो आप जैसे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से तारे टिमटिमा रहे हैं, And the ocean is his waist. और जो सागर है वो भगवान की कमर है। So our waist brings together the top half and the bottom half of our body. तो जो हमारी जो कमर है वो हमारे ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से को जोड़ती है। Just like the ocean brings together two different pieces of land. जिस प्रकार से सागर जो है समुद्र दो अलग अलग जो है स्थानों को एकत्रित करता है, But जोड़ता है। Krishna is always dancing. लेकिन भगवान जो है हर प्रत्येक समय जो है नृत्य कर रहे हैं। And you can see this in the ocean. इसी Krishna's dancing waist. इसी प्रकार से हम समुद्र में देख सकते हैं, इस प्रकार से जो वेव्स होते हैं इसका मतलब है भगवान नृत्य कर रहे हैं। The different ages are the Lord's movements. और जो अलग अलग युग होते हैं वो भगवान के जो है मूवमेंट जो बदलाव है वो है। As we pass from childhood through our life, this is the Lord moving through our life. तो जिस प्रकार से हम जो है अलग स्तर पर आते हैं, बच्चे से हम बड़े होते हैं, तो इसका मतलब जो है भगवान मूवमेंट कर रहे हैं, भगवान चल रहे हैं, परिवर्तन कर। So all religious people understand this one. तो जितने भी आस्तिक लोग हैं, धार्मिक हैं, वो इस तथ्य को समझते हैं That it is Krishna's intelligence that created the world. जो भगवान की ये भगवान की बुद्धि है जिसने इस संसार की उत्पत्ति की है। Even something very simple like this requires a lot of intelligence. यहाँ तक कि एक इस करताल को बनाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता होती है। If some archaeologists find something like this, they understand it was created by intelligent humans. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं अगर वो इस चीज़ को देखेंगे तो वो बता देंगे कि जिन्होंने इसका निर्माण किया है उनकी जो बुद्धि जो काफ़ी विकसित रही होगी। And the world is so much more complicated. और इसी तरह से ये संसार जो है बहुत ही ज़्यादा जटिल है, Created by the Lord's intelligence. जिसकी उत्पत्ति भगवान की बुद्धि के द्वारा हुई है। In his intelligence are the saintly persons. और जो भगवान की बुद्धि है वो जो है हम जो संत देखते हैं वो हैं। When we hear from the saintly persons, we are in touch with the intelligence of the Lord. तो जब हम किसी संत को देखते हैं तो हम भगवान की बुद्धि को समझ सकते हैं। His mind is the moon. और भगवान का जो मन है वो चंद्रमा के तुल्य है। So our mind is very changeable like the moon. इसी जैसे जो है चंद्रमा बदलता रहता है, इसी प्रकार से हमारा मन भी And we may विचलित होते think हैं। the Lord's mind is like this also. और हमें ये लगता है कि भगवान का मन भी क्या इसी प्रकार से है। We may think sometimes he likes me, sometimes he doesn't like me. We may think. We might think sometimes Krishna likes me and sometimes he doesn't like me. तो हम ये सोच सकते हैं कि किसी समय भगवान हमसे प्रेम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। But the moon is not actually changing. परंतु वास्तविकता ये है कि जो है चंद्रमा नहीं बदलता है। Krishna's love is actually constant. इसी प्रकार से भगवान का प्रेम भी स्थिर रहता है। And Rudra is his ego. और जो रुद्र देव है वो भगवान का अहंकार है। How do we know we have an ego? हमें कैसे पता चलता है कि हमारे अंदर अहंकार है? We can tell when we get angry. तो हम जानते हैं जब हमें गुस्सा आता है, इसका मतलब हमारे अंदर And अहंकार। people like to say, oh, I am getting angry because of some principle. और लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है, उसके पीछे भी कुछ वजह है, सिद्धांत है। Sometimes that is true. कभी कभी ये सत्य होता है। But usually when we get angry, it is because our ego has been offended.
तो लेकिन वास्तविकता ये होती है जब हम गुस्सा होते हैं, इसका मतलब हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाई गई है। So if Krishna also gets angry with his ego, then he is like us. Is that true? तो क्या आपको लगता है जब भगवान के अहंकार को ठेस पहुंचती है तो वो भी हमारे तरफ गुस्सा होते हैं? No, his anger is out of love. नहीं, ये सत्य नहीं है। उनका जो गुस्सा है वो भी जो है प्रेम से ही आया है। Just like if we see a child is playing with something dangerous, we may become angry. जिस प्रकार से हम एक बच्चे को किसी खतरनाक चीज से खेलते हुए देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है। And this is a very easy one to meditate on. और जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो बहुत ही आसान है जिससे हम भगवान को Because, स्मरण कर सकते हैं। because every day we are in touch with birds. क्योंकि हम प्रतिदिन जो है चिड़ियों के संपर्क में रहते हैं। So the birds, they show that Krishna is an artist. तो पक्षी हमें ये बताते हैं कि भगवान एक कलाकार हैं। So how do we see Krishna's artistry? How do we know that Krishna's artistry is there from the birds? तो हमें किस प्रकार से भगवान की कलाकारी के बारे में पता चलता है? जब हम पक्षियों को देखते हैं उससे पता चलता है। You have answered, mother. Did you answer? When they are, They chirp. When birds chirp. they're sounds. Yes. Yes. तो जब जो पक्षी जो है आवाज जो है निकालती है। And even the ones that say "Caw, caw," that's like the drums. तो जब वो अलग अलग निकालते हैं, आवाजें निकालते हैं, वो लगता है कि ड्रम बजने के तुल्य। Okay, how else? Yes? इसके अलावा How they build their nests. Oh, very nice. I couldn't hear. How they build their nests. ओके, किस प्रकार से वो अपना घोंसला बनाती है? जब वो घोंसला You should also get some Mahaprasadam. हाँ, 3 को महाप्रसाद मिलेगा। How else do we see that the birds show Krishna's artistry? और क्या चीज है जिससे हमें पता चलता है कि भगवान की कलाकारी को प्रस्तुत करते हैं बर्ड्स? The way they dance and move. जिस प्रकार से वो नृत्य करते हैं और मूवमेंट करते हैं, The way they fly. और जिस प्रकार से वो उड़ान भरते हैं। Even the birds that don't fly, इवन द बर्ड्स, that do not fly, और यहाँ तक कि वे पक्षियाँ जो उड़ती नहीं है, like the penguins. पेंगुइन उनमें से एक है। And how else do we see Krishna's artistry in the birds? और क्या क्या है? Oh, very nice. Yes, all the different colors. तो जिस प्रकार से पक्षियों के अनेक प्रकार के जो उनके रंग होते हैं, कलर्स होते हैं उनके। So this one is very easy. ये बहुत आसान तरीका है। We are always seeing and hearing birds. हम जो है हमेशा पक्षियों को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। Humanity is where he lives. Humanity is his Home. जो मानवीयता है वो भगवान का घर है। Just like in every human society there is religion. In every human society there is some kind of religion. और हर एक जो है मानवीय समाज में धर्म होता है। And we have a temple, a church, a mosque, and we call these places the house of God. और चर्च होता है, गिरजाघर होता है, मंदिर होता है, मस्जिद होता है, तो हम इनको जो है भगवान का घर कहते हैं। And the angels show the Lord's musical talent. और जो परियां हैं वो भगवान के जो है म्यूजिकल टैलेंट। Every country of the world they always show angels as musicians. तो कई सारे देशों में जो है जो एंजल्स, जो परियां हैं, वो भगवान के जो म्यूजिक को प्रदर्शित करते हैं। Did he get that? I got it. Yes? No? Yes, okay. So the demon soldiers, they show his prowess. His palace powers. तो और जो आसुरी शक्तियां हैं और जो आसुरी लोग हैं वो भगवान की
शक्ति को बताते हैं. So, what did Hiranyakashipu ask Prahlad? What did Hiranyakashipu ask Prahlad? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से क्या कहा? What did he say? Where do you get your superhuman powers from? वो प्रहलाद को पूछते हैं. Oh, no, not like that. Be Hiranyakashipu. So, yeah, I'm not like Krishna. तो वो कहते हैं कि आपको ये शक्तियां कहाँ से आई है? And what did Prahlad say? तो प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया? From the same place that you do, Father, from Krishna. तो उन्होंने कहा कि उसी स्थान से जहाँ से आपको अपनी शक्तियाँ मिली है वो है भगवान कृष्ण से. So the demon soldiers, they are getting their power from Krishna. तो जो आसुरी हैं उनको भी जो शक्तियाँ उनके पास हैं वो भी कृष्ण से ही आती है. And the Lord's thighs are the Vaishyas. और जो भगवान की जांग है वो वैश्य हैं. So the thighs are our biggest bone. जो हमारी जांघें होती हैं उसमें सबसे बड़ी हड्डियाँ होती हैं. In the same way, the Vaishyas are supporting society. तो इसी प्रकार से जो वैश्य है वो समाज को सपोर्ट करता है. They are supplying all of the raw materials for food, clothing, building, medicines. वो सभी प्रकार के हमें वस्तुएं देती हैं, रॉ मटेरियल्स देते हैं, जैसे कि कपड़ा हो गया, खाना हो गया, ये सारी वस्तुएं हमें देती हैं. They are the main employers in society. वे समाज में सबसे मुख्य कार्य करते हैं. They are the main givers of charity. तो वो जो है जो दान करते हैं वो मुख्य हैं उसमें. They are the main payers of taxes. वही जो टैक्स कर ऋण देते हैं वही है. And the Sudras are on the Lord's feet. और जो शूद्र हैं वो भगवान के चरण है, पैर हैं. The Sudras are the people who make everything work in the world. और जो शूद्र हैं वो देखते हैं कि क्या संसार में सारी चीज़ सही प्रकार से कार्य कर रही है. They make the world function. वो चीज़ों को कार्य करवाती हैं. And they make the world beautiful. और वो चीज़ों को सुंदर बनाते हैं. And the Shudras have a mood of service. और जो शूद्र हैं उनका जो है सेवा भाव रहता है उनके अंदर. They are trying to please their customer, their client. वो हर समय प्रयास करते हैं अपने ग्राहकों को प्रसन्न करने का. They will paint a beautiful picture to hang in someone else's house. तो वो जो है लोगों के घर पे जो है बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाते हैं. And their mood is the closest to bhakti. और उनका जो भाव रहता है वो भक्ति के निकट रहता है. That is why we are all called das or dasi. इसलिए हम अपने आप को दास दासी कहते हैं. So they get the shelter of the Lord's lotus feet. और वो भगवान के चरणों उनको प्राप्त होते हैं, चरण कमल. From the Lord's navel is the sky. और भगवान की नाभि जो है वो आसमान है. The whole universe came from his navel and will go back in. तो ये पूरा सृष्टि है वो भगवान की नाभि से उत्पन्न होता है और उसी में ही समाप्त होता है. The upper planets are his chest. और जो दूसरे जो है ग्रह हैं वो भगवान की छाती है, चेस्ट है. On his eyebrows are all of the rules, all of the vidhi. और उनके जो आईब्रोज हैं वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल, नियम विधि, Okay, नियम fine. विधि When we are doing the right thing, then Krishna is like this. तो जब हम सही चीजें करते हैं तो भगवान इस प्रकार से देख रहे हैं. When we are doing the wrong thing, Krishna is like this. और जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो भगवान अपना रिएक्शन चेंज करते हैं. Then anger is on his forehead. और भगवान जो गुस्सा है वो क्रोध है वो भगवान का माथा है. When we are angry, our forehead can get wrinkled. और जब हमें गुस्सा आता है जो हमारे माथे हैं उस पे wrinkles पड़ते हैं. And I think when we are angry, we are stuck in one of those wrinkles of the Lord.
तो जब हमें गुस्सा आता है इसका मतलब हम भगवान के माथे पे फंस गए समथिंग. We're like stuck there in the wrinkles. तो इसका मतलब हम भगवान के जो है माथे पे फंस गए हैं जब We- हमें गुस्सा आता है. We cannot see him very clearly. तो हमें दिखाई नहीं देता कुछ भी. On his shadow is death. और जो छाया है वो मृत्यु के तुल्य है. We can say, how can Krishna have a shadow? हम कह सकते हैं कि भगवान की किस प्रकार से छाया हो सकती है, He is all effulgent. क्योंकि भगवान ऑल इफल्जेंट है. But when I turn from Krishna, I create a shadow. परंतु जब मैं पीछे देखता हूँ तो हमें एक छाया उत्पन्न होती है. And in his smile is Maya. और भगवान की जो हंसी है वो माया है. Mahamaya and Yoga Maya. महामाया और योग माया भी. And all living entities are within his body. और जो जीव हैं सभी प्रकार के वो उनके भगवान के शरीर में है. So at the beginning, I asked everyone to pick 1, 2, or 3 things from this presentation that you are going to meditate on this week. तो मैंने क्लास चर्चा के प्रारंभ में ही कहा था कि आपको 1, 2, 3 चीज़ों को याद रखना है जिससे आप भगवान के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, स्मरण So कर I would सकते हैं. like to ask for volunteers. तो हमें कुछ वॉलंटियर्स की ज़रूरत है जो हमें ये आंसर देंगे, To tell me one thing that they are going to meditate on. जो एक चीज़ के बारे में बताएंगे जिसके ऊपर वो ध्यान लगाएंगे. Krishna's hairs are like trees. Krishna's hair on body are like trees. Very nice. Okay. Yes. So when When we speak truth pleasingly, we are on Krishna's chest. Very nice. Krishna is opening, closing his eyes day and night. Very nice. Yes. You are breathing in the prana of the Lord. Or Krishna's breath. Oh. Very nice. Yes. Yes, we are having eye contact with Krishna. Yes. But what thing specifically? What's one specific thing? Oh, very nice. Okay, yes. The moon is Krishna's mind. Yes. Yes. Sadhus are the Lord's intelligence. Yes. The ocean as his waist. Very, very nice. Yes. The rivers are Krishna's veins. Excellent. Yes. Ooh, yes, we are walking on Krishna's body. Yes. Oh, Krishna is smiling? When we chant Krishna's name? He's hearing us. Huh? Oh, yes, we are touching his skin. Yes, very nice. Yes. Yes, we are walking on his body. Very nice. Yes. Yes, the birds in Krishna's artistry. Yes. Humanity is the residence. Excellent. Yes. The nails of Krishna is the stones. So thank you very, very much. I hope you enjoyed this. So any of you who want, this is just English, so if you can't read English, it doesn't matter. So just,
We have some books in English. If you want to go deeper, we have, this is also from Bhagavad Gita, like I am the taste of water, and also from the Bhakti Rasamrita Sindhu with Krishna's qualities. And just you can open anywhere, and there's little 5-minute meditations. If you have children, you can read with your children. And if you want to go deeper, we have these books here. And Ananda Gopal Jivan Prabhu of Golden Age Media, he very kindly publishes my book, so he brought the other ones too. This is How to Chant Without Offense, illustrated, very simple book. This is a Hare Krishna novel. So this one man who goes from being a materialist to Krishna Prema. And then here is the Instructions to the Mind of Raghunath Das Goswami with commentary of Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda's poems. We have 120 illustrations and also many color illustrations. We have commentaries of contemporary devotees like Sachinandan Maharaj, Bhaktivigyan Maharaj. And then this is the Krishna Meditations book is new. This is also our new book, Career Dharma. It's become a bestseller on Amazon. So I would like to ask you, what is the subject Prabhupada talked about a lot and wrote about a lot, and he said he wanted us to do it, but nobody knows what it is or how to do it. What is that? What is that? Everybody, louder. Varnashram, yes. So this is just the Varna part, little bit ashram. How to find out what is your nature. How to find out how you can use your propensities in service, how you can use your propensities to make a livelihood, how you can help your children to discover what is their nature, how to do your career so that there is no difference between your sadhana and your career. And we also discussed what is a perfect society. So for 6 years, I worked on this with my co-author, Dr. Ruchira Datta. So my PhD is in education, her PhD is in mathematics. She's also a scientist. She does a lot of cancer research. So this is from Bhagavad Gita and Bhagavatam, but also we have over 400 citations from various studies and empirical research. So we also have this available if you would like a copy. So anything good you have found in this presentation is from Srila Prabhupada. Anything bad is from me. So you please take the good and ignore the bad. And I would like to thank our very, very patient and humble translator. Haribo. Srila Prabhupada ki jai. So on behalf of Iskcon Noida, we'd like to thank Her Grace Urmila Mataji for helping us understand how to remember Krishna all the time in a day-to-day life with such nice illustrations, and she gathered so many quotations from different Shastras, Bhagavatam, Bhagavad Gita, and she gave us a different way to look at it. So we'd like to thank her for this wonderful presentation by saying one time loudly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we once again request her, whenever she comes to NCR region, she will always find some time to come here to Noida. Thank you so much, Mataji. एंड जिनको भी माता जी के द्वारा रची गई पुस्तकों को प्राप्त करना है, यहाँ पर टेबल उपलब्ध है, टेबल पे आप यहाँ से बुक्स प्राप्त कर सकते हैं। जो भी माता जी अभी पुस्तकें दिखाई हैं तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो जो माताजी ने जो पावर पॉइंट शेयर किया था स्क्रीन पर, जिस किसी को ये प्राप्त करना है, अपना ईमेल एड्रेस, इसको आपको कहा, ये प्रभु जी उधर है सामने बैठे,
वो अपना ईमेल एड्रेस दे करके ये पावर पॉइंट जो है प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक भक्त जो है अपना ईमेल एड्रेस लिखवा रहे हैं, तो आप अपना ईमेल एड्रेस इसमें लिख सकते हैं। दैट विल बी बेटर यू ओके हियर एक पेज दे दो आप, एक पेज दे दो। हरे कृष्णा। तो जो 15 से 35 साल के युवा गर्ल्स बॉयज कपल्स हैं, आप सभी के लिए प्रसाद है। क्लास के बाद आप सभी प्रसाद के लिए जरूर जाइए। उससे पहले एक सूचना है, जो 15 से 35 के बीच युवा गर्ल्स बॉयज कपल्स है, उनके लिए बहुत ही सुंदर इस्कॉन नोएडा की तरफ से एक इवेंट का ऑर्गेनाइज